हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोध एमएस चैनल। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। लास्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने दो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो ये आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं। लिस्ट 1 में टाइप ऑफ इफेक्ट, लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन है। ए वेबलिन इफेक्ट, देन स्नोब इफेक्ट, देन बैंड वैगन इफेक्ट, देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? रिडक्शन इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वेबलिन इफेक्ट क्या होता है? वेबलिन इफेक्ट इज योर कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। ऑप्शन 1। सो वेबलिन इफेक्ट कब होता है? जब पीपल ज़्यादा एक्सपेंसिव गुड खरीदते हैं, व्हेन देयर आर चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। स्नोब इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट का क्या होता है? दिस इज योर नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। बी मैच विद द थर्ड। सो स्नोब इफेक्ट जब होता है जब रेयर, जैसे फॉर एग्जांपल रेयर वर्क्स ऑफ आर्ट्स है, स्पेशली डिज़ाइंड क्लोथिंग है, वेरी एक्सपेंसिव लग्जरी कार है, तो ऐसी चीज़ों को लोग खरीदते हैं। ठीक है। देन योर बैंड वैगन इफेक्ट, दिस इज योर पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। सो बैंड वैगन इफेक्ट ऐसी डिज़ायर की जो गुड है वो डिमांड में है और पर्सन उसको खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो स्टाइल में है। ओके, because possession of a good is in fashion and therefore many others have it. So these are your match: A1, B3, C4, D2. Question is, arrange the following in a sequence with regard to price, leadership, sustainability. So ये सीक्वेंस में लगाने हैं रिगार्डिंग द प्राइस, लीडरशिप, सस्टेनेबिलिटी। सो सबसे पहले आएगा C, the dominant firm sets the price of the commodity that maximizes its profit, right? Then A, small firms in the industry are allowed to sell all they want at that price. Then E, dominant firm then comes into fill the market. Then B, dominant firm acts as the residential supplier of the commodity. And the last one is small firm in the industry behave as price takers. So your sequence will be CAEBD. Question is, which one of the following statements is the most relevant to the substitution effect? Substitution effect से सबसे ज़्यादा relevant कौन सी statement है? So 1, in the real world substitution effect income effect से काफ़ी ज़्यादा होता है. So this is yes, this is the statement which is most relevant to the substitution effect. Option number 1 is the correct answer. Question is, which one of the following concepts measures the amount of capital that a firm can give up by using one additional unit of labor and still remain on the same ISO quant? So ये कौन से ऑप्शन में से रिलेट करता है? सो ऑप्शन नंबर 1, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन and economic trade of region, diminishing marginal rate of technical substitution, and diminishing marginal utility. So this is related with the concept diminishing marginal rate of technical substitution. Option number 3. Question is, identify the source of oligopoly which is also applicable to monopoly firms. So इनमें से आइडेंटिफाई करना है आपको सोर्सेज ऑफ ओलिगोपोली जो मोनोपोली फर्म्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं. सो ऑप्शन नंबर 2, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्केट. ऑप्शन नंबर 2. Question is, which one of the following statements does not support the concept of third degree price discrimination? So third degree price discrimination, 3 टाइप्स के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है आपका: फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री. थर्ड डिग्री में क्या होता है कि चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर फॉर द सेम गुड, दैट इज योर थर्ड डिग्री. ओके, सो यहाँ पे कौन सा नहीं है? विच following statement does not support the concept? So option number 2, this type of price discrimination is most likely to occur in the manufacturing industry. No, the firm must have monopoly power.
Yes, the firm must be able to keep the two markets separate. The price elasticity and demand for the commodity must be different in the two market. Okay, so option number 2. Question is, which of the following factors are attributed to the weakening of Indian rupee? So rising cost of imports, this is the factor. Widening trade deficit, this is also the factor. And opening of rupee Vostro account, this is also the factor. So option number B, C and D. So Vostro account क्या होता है? Vostro account is an account that domestic banks hold for foreign banks in the former's domestic currency. Match the list 1 with list 2. List 1 bond rates and risk are given, then description are given in list 2. So number 1, coupon rate. So coupon rate is your annual coupon stated interest payment divided by the face value of a bond. Then yield to maturity is the interest rate required in the market on a bond. Then interest rate risk, this is your, it germinates and originates from fluctuating interest rates. Then current bond yield, it is obtained by dividing annual coupon by the bond price. Question, which one of the following instruments is often used to protect the value of a foreign currency denominated transaction? So often used to protect the value of a foreign currency. So this is your forward hedge. Option number 3. Question is, which of the following theories of capital structure articulates that a firm borrows up to the point where the tax benefit from extra debt is exactly equal to the cost that comes from the increased probability of financial distress? So ये थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? ये है आपकी द स्टैटिक थ्योरी. स्टैटिक थ्योरी इज द ट्रेड ऑफ टैक्स शील्ड अगेंस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. ऑप्शन नंबर 1. Question, the earning per share for Avanti Corporation is ₹4. The rate of return on investment is 16%. Rate of return on investment is 16% and return required by its shareholders is 12%. What will be the price per share as per the Walter model if the payout ratio is 40%? So formula, P is equal to D upon KE plus R E minus D upon KE upon KE, right? So your D is 1.6, then rate is 16%, 0.16. D कैसे निकलेगा? It is 40%. payout ratio is 40% of 4. So 4 का 40%. This is 1.6. That's why here it is 1.6. Then KE is 12%, 1.12 plus R 0.16. 4 minus 1.6 divide by 0.12 divide by 0.12. When you will solve it, the answer will be 40. Option number 3 is the correct answer. Question is a discrete probability distribution. Discrete probability distribution में क्या होता है? जब हम assign करते हैं probability to each possible value of the random variable. Option number 2. Question is, arrange the following steps of a well-planned experiment in the sequential order. So well-planned experiment को sequential order में लगाना है. सबसे पहले आएगा select relevant variables for testing, then specify the treatment levels, then control the environmental and extraneous factors, then choose an experimental design suited to the hypothesis, then assign subject to groups and conduct pilot test. So your sequence will be EADCB. Question, in order to conduct exploratory data analysis, which of the following are used by a researcher in the 5-number summary? So 5-number summary में researcher इनमें से कौन सा
यूज़ करेगा टू कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, सो वो यूज़ करेगा मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू. ऑप्शन नंबर ए, बी, डी एंड ई. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस. प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस कौन कौन से हैं इसमें? एक है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, देन स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, देन आफ्टर ओनली स्टडी. ऑप्शन नंबर ए, डी एंड ई. Question, in one factor ANOVA the computed F value will be negative when there is no difference in the treatment of means, when there is no difference within treatments, when SST total variance and larger than SSE error variance, then fourth one, under no circumstances. So option number 4, under no circumstances in one factor ANOVA the computed F value will be negative. Option number 4. क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, इसमें से बताना कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है. ओके, सो स्टेटमेंट 1, फॉर अ गिवन सैम्पल साइज एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एल्फा द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज एक्सीड्स दैट ऑफ जी. दिस इज ट्रू. Statement 2, for a given level of significance alpha, the critical value of students T increases as N increases. This is not true. So statement 1 is true and statement 2 is false. Question is, the price earning ratio for firms in a certain industry follows the normal distribution. A firm's price earning ratio has a standardized value Z is equal to 1.0 and it is included in the highest dash of firms in the industry. So कितने परसेंट ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. सो जी की वैल्यू 1 है तो पी की वैल्यू टेबल से हम देखेंगे 0.8413 होती है. ओके, सो 1 में से पी माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.8413, सो ये आपका निकल के आ जाएगा अराउंड 15.87%. Option number 3 is the correct answer. Match the list 1 with list 2. Description, identifiers, then research design. The time dimension. Time dimension is related with the cross-sectional study, the purpose of the study, the topical scope of the study, the degree to which the research question has been crystallized. So the purpose of the study is your descriptive study. Then C, the topical scope of study is your statistical research. The degree to which the research question has been crystallized, this is your exploratory research. Question, in a certain population 22% of people are smokers, 57% of people are males and 12% males are smokers. If a person is chosen at random from the population, what is the probability that selected person is either a male or a smoker? So probability of male or smoker क्या हो जाएगी? Probability of male plus probability of smoker minus में probability of male and smoker, right? So ये है 57 plus 22 minus 12. So this will be a 67, 0.67. Option number 4 is the correct answer. So thank you so much. That's all for today. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, please do like, share and subscribe my channel. I'll be bringing more such content for you to enhance your preparation. Thank you.